Okay, so this question, Venkat, I'll provide you in the interview sheet as well. Okay. Subhas, Yes, sir. Yes, sir. So, there is a functional requirements, non-functional requirements, the project scope, scope creep. The, look at the camera. yes, sir. Look at the camera and then answer confidently, guys. Yes, sir. Like the BRD consists like the project name, version name, date, the roles defined, and function all the functions, functional requirement, non-functional requirements, and the business scope creep of the project, and the project submission like the project submission date, and the I told you, guys. Okay, Nancy, the next question is coming to you. Can you please Yes, tell sir. me what is BRD and what are the content of BRD? So BRD is a business requirement document, and it is used to gather the requirement, and we get it signed by the client also. And if we talk about the content, then very first thing comes is the project. What is the project name, then version, and the date. Date of the BRD when you started, when you start the project. And in content, you provide a summary of the project, like what we are going to make in this particular application. And then comes the business, um, uh, sorry, what we call it. Um, there was no business requirement. It also have business requirements and functional requirements and non-functional requirements as well. Plus, we also have the objectives of the particular project that we are going to work on. Just name. And I want only name. First of all, you started your answer. Sir, BRD is used to gathering the requirement. yes, sir. Is it correct? And no, sir, I said it's a business requirement document where we put the requirements of the application as well, and then all the details of the project, like what is this project all about and what Understood we are here? going to develop. Okay. So BRD will use to document your requirement in the project. Okay. Yes, sir. Now please continue with the content of BRD. Mm, yes, sir. Firstly, as I mentioned, that the summary of the project and the objectives of the project, um, business drivers, no, sorry, project drivers, and project scope, business requirements, which contains functional and non-functional requirements both. And we do have diagrams also, or uh, the stakeholder sign of that particular box is there, which we need to like client. We take the sign off from the client and version checked by them. And constraints, mm, project constraints. ऐसे बताया मैंने. Sorry, sir. Actually, I didn't get much time to revise all this, but 3 दिन 4 दिन 3 दिन sorry. वेंकट ने बोला मंडे से ट्यूसडे सर. Yes, sir. Sir, there are content of BRD will start with the project name. याद है आपको नैन्सी जी, जब आपने इतना आंसर स्टार्ट किया था सेकंड क्लास में, आपने मुझे ऊपर के 10 कंटेंट एकदम तोते जैसे बोले थे. Yes, sir. The content of the BRD will be, sir, will have the project name,
Then we will have one-liner description of the project. Then we will have version. After that, it'll start with the document revision, approval. Then we are having project summary. In project summary, we are having in scope, out of scope, then function requirement, non-function requirement, business process overview, current process, proposed process, service constraint, assumptions. Then we are having पूरा बताया था नैन्सी जी आपने. Yes, sir. Okay, next question is coming to Shashank. Shashank, can you please tell me what are the agile ceremonies? The agile ceremonies are sprint planning, daily stand-up, sprint review, and sprint retrospective. Okay. Subhas, next question is coming to you. If you want to document your requirement in Agile, how would you do? Sir, we document our requirement in Agile as a user story and test case. You will document your requirement in form of user story and test cases. Do you have any another way to document your requirement? Product backlog. Requirement. Why confidence is not showing in your face, guys? Confidence क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? Sir, we document our requirement in Agile in terms of product backlog, sprint backlog, user story. Sir, we write the test cases in Agile in terms of acceptance criteria. Venkat, the next question is coming to you. What do you understand by sprint review and the sprint retrospective? One minute. In sprint review, that the client is going to check the product, that how whether all the requirement is working or not. He is going to check all the sprint. And in sprint retrospective, we are going to check that what we have done that in the sprint in previous sprint, and what positives we are going to take it forward, and what negative we have to go rectify that in next retrospective. Sorry, last line, what you said? Negatives, what negatives we are done in previous sprint, and we have what we have to rectify that in upcoming sprint. Check in sprint rate. Okay. So can you please tell me, Nancy, how we can document our test cases in Agile? Sir, in Agile, we document our test cases in the form of acceptance criteria in the user story only, where we mention the storyline actually. Sorry, where you mentioned the? In Agile, in Jira, actually. So sorry. I'm so क्या sorry. कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? I'm so sorry. Just give me 1 second. So we take all this test cases. We write these test cases in the form of acceptance criteria in the application called Jira. I hope I have. तो इतना बोल के रुक जाना है ना नैन्सी? Sir, we document the test cases in form acceptance criteria in Agile, and for that we are using the Jira application. Yes, sir. अब यूजर स्टोरी को क्यों बीच में ला रहे हो आप? Yes, sir. Shashank, can you please tell me what is the format of writing the user story? The format of to write the user stories are first one is as a business user, and the what are the so okay. Okay, let me reframe the question.
you want to have one payment integration in your mobile application. Okay. Okay. Payment integration feature that you are looking in your application, write the user story for this. The user story for the payment integration is as follows. As a business user, I need to have a payment integration system to my application so that the customer can use these features. This is the user story. Nancy, tell me the acceptance Yes, sir. criteria for this. Given when given the customer land on the sir, can you just repeat once again? Payment Sorry. integration. Sorry. Okay. So given the customer lands on the payment page, then when the customer click on the payment, the payment gateway should open and the payment option should be available, just like IMPS, RTGS, NEFT, and then comes when any of the options chosen by the customer, the payment option must ask the amount and the details which needs to be filled by the customer, and then the payment gateway should allow the user to make the payment. Okay. Venkat, the question is coming to you. What is sprint? Sprint is a timeline to one minute. थोड़ा. Sprint is a active task we have to complete that. That is 14 or 21 days. Subhas, what is sprint? Give me the definition. Sprint is a process where we break down the large amount of tasks into small amount of tasks, and we put it in the Jira as a sprint backlog, and then the sprint start, and it goes to 14 days to 21 days. Like maximum days is 21 days. The sprint comes, and then the next sprint. Sasank, define sprint. Sprint is a subsidiary of a product backlog, and this sprint contains the requirements assigned from the product backlog. The sprint usually the task to be completed within 14 or 21 days. Okay, Nancy, can you please tell me what is story points? Story points are the specific timeline which is given to complete a particular requirement, or we can say that particular sprint. Yes, to define the timeline of the particular sprint. It can be in hours, it can be in days also. That the efforts required to complete the sprint. Yes, sir. Okay. Subhas, can you please tell me what are the requirement elicitation techniques? They have completed, right? No? I'm asking Nancy, Subhas, Venkat. Have you started required elicitation? No. No, sir, they haven't started. Sorry. No, sir. ठीक है, okay. Sasank, can you please tell me the difference between the internal and external stakeholders?
the difference between the internal and external stakeholders are in the internal stakeholders, the team consists of a product owner, product manager, a data engineer, a business analyst, a scrum master, and a tester, as well as the developer. While in the external stakeholders, there will be a client side which they belongs to the client side employees like auditors, be a business analyst from the client side and the client itself. Venkat, what are Rashi metrics? RASI matrix is the chart that is define that who is the responsible and who is accountable and what is the meaning of सीखा याद नहीं है सीखा आई क्या याद नहीं वेंकट बहुत गलत किया आज responsible, accountable and सीखा नॉट एक्सेप्टेड, बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है वेंकट, ये तो इससे इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे ना वेंकट। एग्जैक्टली एक्चुअली वो सीखा ही का वो फुल फॉर्म समझ में नहीं आ रहा था। I have given an assignment. Have you completed the assignment? नहीं वो एक्चुअली थोड़ा वर्क थोड़ा ज्यादा था इसलिए आज मेरे को ऑफिस से भी लेट हो गया। अगर वो शायद वो कंप्लीट करते हैं तो शायद याद रहता था वो कंप्लीट करके। This is the purpose of assignment. Nancy, can you please tell me what is Rashi? Sir, I skipped the yesterday class and मैं उसका वीडियो भी देख नहीं पाई। I'll do it today. Okay. Nancy, can you please tell me who prioritized the product backlog? Who prioritized the product backlog? Sir, Epic. Epic, very good. Epic prioritized the product backlog, right? Yes, sir. नहीं sir, I'm so sorry. So Sang, can you please tell me what is Epic? Epic is a large set of body that is broken down into small manageable tasks in the form of user stories. Very good, Sasank. Okay, Subhas, can you please tell me who prioritized the backlogs? Product manager, very good. Venkat, can you please tell me who prioritized the product backlog? Client is क्या बात है, very good. मैंने पढ़ाया नहीं है. Sasank, can you please tell me who prioritized the product backlog? Client. Yeah, I told you guys the responsibility. Product owner? Yes, Nancy ji. Product owner, sorry. Epic? I'm so sorry. Actually, I got confused. Like, मैं थोड़ा सा उसमें एक टॉपिक मैं केवल आपसे स्क्रम के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज, उसमें आप लोग ऐसा कर रहे हो। नो, ओके guys, I'm not satisfied with today's result. Now again we have the mock, और अब ये और कठिन मॉक होगा। अब जो मॉक हुआ उसमें मैंने केवल एक टॉपिक से पूछा, टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू द इंटरव्यू शीट। उस इंटरव्यू शीट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने हैं, लाइक मॉस्को टेक्निक, डेफिनेशन ऑफ डन, इन्वेस्ट टेक्निक। इसका क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो आपको सारे डेफिनेशन याद होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। आप लोगों ने बहुत अच्छी खिचड़ी पकाई, वेरी गुड। ओके वेंकट वेरी गुड है वेंकट यार, सर वेरी गुड वेंकट। किस लिए सर?
इतनी अच्छी खिचड़ी पकाने के लिए सर? खिचड़ी, यू नो व्हाट इज खिचड़ी? हाँ पता दाल है। चावल सब्जी, लाइक हाँ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हाँ आप? तहरी, हाँ, तहरी। खिचड़ी है सर। खिचड़ी है ना, खिचड़ी बनाया बढ़िया आप लोगों ने। एक एक चीज बताई हुई है, आराम से बताया, रिकॉर्डिंग है, नोट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस है। आप शशांक, नैन्सी, सुभाष, वेंकट, यू गाइस आर एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास। नैन्सी से बीआरडी कंटेंट पूछो, वो ऐसे बताते हो क्या बात है। और आज पूछा तो क्या है सर क्या। मैंने बताया लगभग, आप मोस्टली रिकॉर्डिंग तो मैंने देखिए, कवर आप करा एक बार, था। करेक्ट, बट आप ऐसे सोच सोच के इतना कवर करोगी ना। अच्छा वो वेंकट ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। यू विल एबल टू सी योर आंसर नाउ। एज अ बीए, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अवर सेल्फ, इट शुड लुक फ्रॉम अवर फेस। हाँ सुभाष जी बोलिए। Sir, I just wanted to request you and as well as everyone if they are comfortable कि सर हम वीडियो मोड ऑन करके क्लास करें अगर हम कहीं पे भी हों, if it is possible to नहीं everyone। नहीं, दिक्कत ये है ना उसमें से सुभाष, आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक हाँ है। हाँ, अब agree। वहां पे कंफर्टेबल नहीं होता है वीडियो कॉल पे, ठीक Like है। because this first time I saw ना, so everyone because याद है लेकिन again everyone skip की सब हमें देख रहे हैं और हम भूल रहे हैं because content दिमाग में almost 50% है। That's agree sir। कुछ सामने देखने में फिर वो skip हो जाए। I felt so। वापस टेस्ट होगा आपका। Yes, sir। अब मैं पूरा इंटरव्यू शीट दे रहा हूँ आप लोग को मैं टेस्टिंग के लिए। एंड नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू हैव टेस्ट, एज आई टोल्ड यू गाइस। आई एम नॉट इन हरी टू कंप्लीट द कोर्स। फ्रॉम 1 to 8 आई एम नॉट अवेलेबल, वो ठीक है, विल एक्सटेंड एंड ऑल, बट वी आर गोइंग टू हैव यू, आई वांट यू टू क्लियर योर इंटरव्यू। Yes, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कस्टमाइज्ड क्लास? शशांक अप्रिशिएटेड, अच्छा आंसर दिया आपने। नैन्सी, योर आंसर वाज आल्सो गुड। यू you know most of the things, but you know expectations were different from you. Okay, एकदम different थी नैन्सी आपसे expectation। वेंकट, there was some thing you missed today, वेंकट। Okay, lots of, now you are having the understanding कि how we are going to have mock test. Okay, now we नहीं, will, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ना अभी से नहीं है, शुरू से। जब भी हम कोई भी मार्क में कभी इंटरव्यू में जब बैठता है ना, स्टार्ट हो जाएगा मेरा ठीक है। आंसर पता है बट वो ठीक ठाक रेस्पॉन्स नहीं कर पाता, ऐसा। मेरा ये पहले बार नहीं, बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस किया हुआ है अभी। Okay, are you comfortable to join the class with on camera? Only you, हाँ हाँ, ओके ओके, नो इश्यू। है ना? You join whenever you comfortable, you open the camera. Why? Because whenever you're facing us na, I'm asking the questions in between as well, right? So you will be used to for getting the question and giving the answer. So whenever you comfortable, Venkat, you open the camera and you give the answer. sir, I ओके। will open the camera। ठीक है, If जो I भी am returning कंफर्टेबल from, हो हाँ, आप yes। लोग कर सकते हो कैमरा ऑन, एंड यू कैन अटेंड द क्लास। बट गाइस एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी आप लोगों से, बट अच्छा किया। नॉट सेइंग कि खराब है, और यू गाइस नो व्हाट यू आंसर। शशांक अच्छा किया, नैन्सी, वेंकट जी, सुभाष, सुभाष आपने भी कुछ क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे दिए। कॉन्फिडेंटली आपने रॉन्ग आंसर दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर सर, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा नैन्सी, सबसे अच्छा सरप्राइज नैन्सी का लगा। हु प्रायोरिटाइज द बैकलॉग? एपिक, सर एपिक, एपिक करना था प्रायोरिटाइज बैकलॉग को। नो नैन्सी, आपको समझना है एपिक क्या होता है एंड ऑल, एंड देन यू नीड टू आंसर। समटाइम इफ यू डोंट नो द आंसर चलेगा, वी कैन से नो आल्सो इन द इंटरव्यू। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू हैव मॉक, मोस्टली ऑन द संडे, नॉट yes, ऑन द right। क्लास डेज। Yes। संडे दिन मॉक रहेगा। नेक्स्ट मॉक में आई एम गोइंग टू गिव अप्रोक्सीमेटली 35 क्वेश्चन। ओके, उन 35 क्वेश्चन के आपको आंसर एकदम दिमाग में याद होने चाहिए। चलिए अब मैं असाइनमेंट पे आता हूँ। नैन्सी, आपने कल क्लास मिस किया, राइट? आपको पता है दो असाइनमेंट क्या है? नहीं, क्योंकि आप वर्किंग हो गए आज, फिर घर आया, ज्वाइन कर लिया क्लास, राइट? तो आप जाके रिकॉर्डिंग देखिए क्या असाइनमेंट है, वो दो असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं आपको। सुभाष, हैव यू कंप्लीटेड असाइनमेंट? सर, हाँ, मैं अभी करने बैठ रहा हूँ सर। अभी याद नहीं सर। नहीं, या तो आप, मैं आपको समझता हूँ, आप सबको समझता हूँ मैं कि आप यू ऑल आर वर्किंग, बट अगर हम कुछ कमिट कर रहे हैं तो या तो हम एक्स्ट्रा डे ले लें, है ना? कोई बात नहीं सुभाष, कोई बात नहीं, प्लीज कर लेना, कल कल तक कर लेना। वेंकट, नहीं किया सर, अगर करते हो तो ऋषि का फुल फॉर्म बताते। नहीं किया।
Venkat, please complete here. You Sure, only sure. said कि सर आज हो जाएगा. एक्चुअली आज ऑफिस में ज्यादा वक्त नहीं था, घर पे तो 8 बजे तक पहुंच जाता था, आज बहुत देर हो Okay, Sasank. Sir, I have completed the one assignment, but the second assignment I will be ready for tomorrow. क्यों भाई? That means you asked for a hypothetical example, right? Yeah, I mean searching for that hypothetical example. How many time, like, what is the number of hours you spent on searching? No, I already searched, but I need some clarity for myself to explain the situations, right? Right. I need some time, like that. Okay, please complete by when tomorrow? Yeah, by tomorrow. Nancy, by when will you complete your assignment here? सर थोड़ा सा ब्रीफ कर दो ना, असाइनमेंट है किस चीज का? Okay. So yesterday we have gone through the stakeholder का class. ठीक है? Okay. उसमें हमने 2 असाइनमेंट दिए हैं. पहला असाइनमेंट है आपका राशि मैट्रिक्स. सो इन माय क्लास आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज राशि मैट्रिक्स. तो वो आपको राशि मैट्रिक्स समझना है एंड देन यू हैव टू मेक द चार्ट ऑफ इट. शशांक ने और डाला हुआ है वो चार्ट. पहला. दूसरा है इज अ स्टेक होल्डर हाइपोथेटिकल सिचुएशन. तो नैन्सी, स्टेक होल्डर कौन होता है मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ. स्टेक होल्डर इज अ पर्सन. बहुत अच्छा आंसर देता है वेंकट. वेंकट इज मास्टर in giving the answer of stakeholder. Venkat, can you please define stakeholder? Stakeholder is a person or group of people are directly or indirectly impact the project or product. Yes, correct. तो stakeholder are the person जिनके साथ हम काम करते हैं. Now, Nancy, you need to understand or think one hypothetical situation जहाँ पे आपका एक stakeholder था and that stakeholder you need to define the difficult stakeholder पहले Nancy. जैसे डिफिकल्ट स्टेक होल्डर में से मैं एग्जांपल लेता हूं. मैं पहले अपना क्वेश्चन बोलता हूं देन आई विल से. सो फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन who was difficult stakeholder in your life as a business analyst. What was the challenge you faced and how as a business analyst you overcome from that challenge. Example, Ashwini is giving the example, my difficult stakeholder was client. One of my client and the situation was my client was frequently changing his requirement as a business as a client. वो change करता था requirement. This change was impacting overall timeline of the project as well as it will create a very pressure situation in my project. As a business analyst, once I was found this situation happening in my project, I created the change management process. In the change management process, I explained to the client, if you want to have any change, you need to come to me, then we'll define the change and all. And मैंने ये सब चीजें उनसे बातचीत की, समझाया, समझा और बाद में ये इशू रिजॉल्व हो गया. नैन्सी जी, Yes, नैन्सी, sir. समझा आपको हम्म. क्या करना है? सर मैं क्लास गो थ्रू करती हूँ, पहले मुझे उसका बेसिक समझना पड़ेगा पूरा. नहीं, इतना समझो कि आप ऐसा बीए काम करते हो नैन्सी. हाँ. स्टेक होल्डर वो होता है जिनके साथ आप काम करते हो. आपको एक Exactly. स्टेक होल्डर ढूंढना है जो कि डिफिकल्ट था. डिफिकल्ट डेवलपर हो सकता है आपका. इट कैन बी योर प्रोजेक्ट मैनेजर, क्लाइंट, इट कैन बी एनीवन. तो आपको नाम लिखना है कि मेरा ये स्टेक होल्डर डिफिकल्ट था. अब आपको सिचुएशन लिखनी है. ये सब सोचना है अपने मन में. फिर आपको सिचुएशन लिखनी है कि सिचुएशन क्या थी वो वाली. फिर उस सिचुएशन के आने से क्या क्या चैलेंजेस आए आपके प्रोजेक्ट में. एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपने उस चैलेंज को कैसे दूर किया. Okay, last day of the question is coming to Nancy. Nancy, as a business analyst, you are working and this is very important question from the interview perspective, guys. So as a business analyst, Nancy, you're working in the project and your requirement are frequently changing. Client is changing your requirement. As a business analyst, have you faced this challenge in your BA career and how you overcome?
Yes, so I have faced this situation in my career. Uh, the when so sorry. Um, so 1 second, sir. Let me recollect all the answers that you have given. So when a client wants to change or add a requirement, I have taken that requirement and analyzed it, and then had a meeting with my developer team, and then discussed that can we manage this particular requirement, and how much time it will take, what will be the scope, and um, the budget also. We will discuss the budget also, and then after that, we'll get back to the client, and as per the BRD that we have taken signed off from the client, we'll refer to that particular change that the client is wanting currently, that will not be taken as a part of the project right now because of the bandwidth of the project. So we'll take this requirement as an upgrade later on after completing the whole project. And uh, uh, yes, sir, that's it. Subhas, what is your answer? Or as a business analyst, first we discuss with the client, can we put this update on our next release, or we require this in this first release only? Because all the BRDs has been collected and sign off have been given, and developers are already started working. And we also have to check whether Now in this situation, सुभाष, जब आप क्लाइंट से बोल देते हो तो आपको अभी चाहिए कि बाद में चाहिए, क्लाइंट विल ऑलवेज से अभी चाहिए. वेंकट, योर आंसर. Sir, we are going doing that agile or waterfall? Waterfall. Actually, in waterfall, if a client is came for change request, My question was, as a business analyst, Venkat, have you ever faced this situation where your client was frequently changing your requirement? If yes, as a business analyst, what was your approach? sir, but मेरा एक reverse. Actually, in waterfall, client at the time of agreement, that is SLA agreement, we both sign that document. Once in waterfall, that requirements fixed ना in waterfall में हम लोग change नहीं कर सकते. But अगर client is बोलता है requirement if it's a client says that requirement very important, then we will take that requirement and we will discuss with developer team and program manager, and if it's possible, then we will add on this into product. Otherwise, we will inform that client that it's not possible to add this product. We will add it upcoming update. We will inform to client. Okay. This is right, but this is second part of my answer that I have told you in the notes. It's the second part. First part, you missed it, Venkat. Shashank. As a business analyst, when the clients came with the changes or any requirement, any new requirement, as per the company policies and all, there is a structured way to handle those changes. So first, we document the changes in a format called BRD, and what are the changes we have to be made, and what are the requirements to be done. And again, we have to analyze the what the time durations and what are the impact of the overall project for overall project
and we have to conduct a stakeholder meeting about the problem facing while the requirement is added. Uh, and we have to showcase the impact of the project for every after the project has begun. And again, we have to convince him um, like what do we say? Uh, the first that the second part Venkat was said was right now, sir. That's the नैन्सी So, अपना स्क्रीनशॉट का पिटारा खोलिए और ये आंसर देखिए आपके पास है क्या. I Sir, have told you this answer in detail, guys. 2 बार yes. को कम से कम बताया है मैंने वेंकट. Your answer is, I'm not saying Venkat, your answer is right, but the first part is very important before going to SLAs, documentation, and the impact analysis. I'm not saying your answer is wrong, Venkat. Your answer is right, but उसके पहले we need to understand something. Okay, हम so लोग ये करना पड़ेगा ना सर. फर्स्ट वी take the requirement and analyzing the requirement and what is the scope of. yes, yes, correct. ये सब आपने नहीं बोला. ये सब आपने नहीं बोला. नैन्सी जी, आपको मिला क्या? सर मेरे को स्क्रीनशॉट तो नहीं मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं. क्योंकि वो मैं नोट नहीं कर पाई थी और उसका स्क्रीनशॉट नहीं था, शायद वीडियो में था वो. अच्छा, वीडियो में स्क्रीनशॉट नहीं था, रिकॉर्डिंग में ही था, तो आपने नोट डाउन नहीं कर पाया. रिकॉर्डिंग था बट सर मैं रिकॉर्डिंग नहीं देख पाई. अच्छा, रिकॉर्डिंग आपने देखा नहीं उस क्लास की? रिकॉर्डिंग देखा है आपने? आपने उसके आंसर को मुझे बताया भी है अभी. फेज 1 फेज 2 सब आप बता रहे हो. सर आई डोंट नो, मैं तो जस्ट मुझे जितना पता था मैंने उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दिया. अभी वो मेरे को स्क्रीनशॉट उसका मिल नहीं रहा है आपने आंसर और किया. मैंने वीडियो भी रेफर नहीं किया. हाँ, बट जो आपने आंसर दिया तो लाइव क्लास में सुना होगा जो आपने आंसर, और फिर उसी को यस रिमेम्बर सर. करके आप बोल रहे हो. शशांक, डू यू हैव नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू फॉर दैट आंसर? yes, sir. कैन यू प्लीज रीड? As a business analyst, my main responsibilities when changes come after sign off is to manage the change in a structured and formal way. I would first document the change request, capturing what exactly the client wants to modify and the reason behind it. Next, I would work with project manager, tech, and quality analyst team to perform the impact analysis, identifying how the change affects scope, cost, timeline, and existing requirement. Then I would communicate the findings to stakeholders or the change control board for decision making. Once approved, I would ensure updates are made to requirement documents like BRD, FRD, and inform all relevant teams so everyone is aligned. Throughout the process, I would maintain transparency and keep a record of all appeared and rejected changes. Correct. Okay, so this answer is available in your notes. जहाँ पे आपने स्टार्ट किया टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, देन यू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट इन माय एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, then you communicate to your stakeholders, then you are going to understand what is the impact of this change in the overall project. Is it going to create the scope creep? What is the impact on the resource, timelines, and the budget? And finally, you are going to communicate with this set of, this will be your input that you are going to take to explain to your client. Then client will say yes or no. And then when client say no, Subhas, what will you do? आपने सब एक्सप्लेन कर दिया, क्लाइंट ने बोला नहीं मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट, क्या करोगे सुभाष? सर उसमें हम कर देंगे अपने बैकलॉग में, बस नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए. हाँ जी. उसको सर ऐड करेंगे, हाँ करेंगे, और नेक्स्ट रिलीज के नहीं, क्लाइंट बोलता है नहीं हमें अभी चाहिए. सर बजट और टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कराएंगे, डिस्कस करेंगे. नहीं करेगा एक्सटेंड, बजट टाइम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्या करोगे?
Nancy? Sir, we have the document called BRD, which the client has already signed off, and then any additional changes, we will not take it because it was already mentioned in that document. क्लाइंट बोल रहे हैं It हमको all चाहिए है. out of scope, and we have already mentioned that out of scope changes, requirements, and in scope requirements in the BRD. Still client is saying Nancy ji, I want this change. Hmm. प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कस करेंगे पहले। करेक्ट, यही आंसर मैंने आपको बताया था इंटरव्यू उस समय क्लास में. यू विल डायरेक्टली टेल टू द प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने सारे, वेरी गुड आंसर, मैंने सारे इम्पैक्ट एनालिसिस किए, सारे डिस्कशन किए, क्लाइंट को बताया, नहीं मान रहा है सर. अब आप देखो क्या करना है इसको. ठीक है, चलिए. So guys, we are going to wrap up today, and your mock was good. It was the first mock where you connected, and I think you did very good revision. बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सब तैयारी के साथ आए थे. 3 दिन की पढ़ाई मुझे, स्पेशली वेंकट, सुभाष, सेंसी, कितना ज्यादा आपने पढ़ाई किया मुझे देखा. शशांक आपका ठीक था, पर बाकी यू गाइस रियली. सार्कास्टिक लग रहा है आपका कमेंट। नहीं, sarcastic है ये तो है. ओके, सर तो नेक्स्ट. सर मेरा एक आंसर है. वो आप वो स्टबर्न वो स्टेक होल्डर के बारे में दिया ना प्रोजेक्ट असाइनमेंट. हाँ असाइनमेंट, हम उसका आंसर हम दे देते नहीं तो नहीं सही नहीं, है. आंसर आपको डॉक्यूमेंट करना है. नहीं एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन में ना हम लोग थोड़ा चैट जीपीटी वो मिल जाएगा, बट अगर डायरेक्टली बोलते हैं तो वो ठीक, सही चलो. आएगा. Now the question is coming to you. You will answer. Let me ask the question, then you will answer. Okay. So the question is, guys, it will take only 5 more minutes. This be patience. Okay. So the question is, as a business analyst, Venkat, have you faced this kind of challenge where you found some of the difficult stakeholder in your project? Yes, sir. Actually, my previous project, there is a one person that he is going to develop the project. He is very stubborn to do that task on time. For that person, we discuss with him that privately send him. Let's get together with outside. And if it's still he is not accepting that offer, we will send that mail to that person. Why you are not doing that project, to put into all the percent into CC, and we will approach that person through mail with all the stakeholders. Okay, so this every sentence was in will. मीन्स फ्यूचर की बात नहीं करनी है वेंकट. हमको बताना है कि हमने जो फेस किया था इन द पास्ट, वी फेस दिस सिचुएशन. Okay, I have done that to sent mail to that person who is not going doing the task, put into all the managers into CC. Then we will ask that why you are not doing that. So Okay. This is the activity we are doing in previous set. Yeah, so please document it. Okay, same document करोगे आप. Okay, you can simply write it down in the notepad or the word file, and you will share the assignment. Same. Okay, very good, Venkat. Okay, guys, from next 2 days, next 3 days actually, Wednesday, Thursday, and Friday, I'm having some schedules which is uh, in the evening only. Okay, so tomorrow I'm traveling, and the day after tomorrow, having 2 days, I'm having some events I need to attend. So can we have class from 7 a.m. in the morning to 8 a.m. in the morning for 3 days? Okay, let's Yes, one sir. by one. One by one, I'll ask. One by one, I'll ask. Okay. Subhas, Yes, sir. comfortable? Yes, sir. Venkat, Yes, sir. comfortable? Sasank? नहीं Yes, sir. एक्चुअली Wait, मेरा Venkat is saying something. हाँ, Venkat. मेरा एक प्रॉब्लम है. एक्चुअली मेरा मिसेस ना प्रोफेसर है, वो सुबह कॉलेज जाता है. कभी कभी उसको ना हम मेरा गाड़ी पे छोड़ के आना पड़ता है. देन उस टाइम मेरे को लेट हो, इसलिए 100% नहीं है, 50-50 चांसेस.
50-50. शशांक, Yes, sir, I will. नैन्सी जी। सर सुबह सुबह घर का काम रहता है, ऑफिस के पहले खाना बनाना ये वो करने में हेल्प करनी पड़ती है नानी की, थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। हम्म, क्या करें? 3 days इज So वेरी बिग डे। tell me बहुत। when you guys will be free. हाँ, सो हम अटेंड कर सकते सर, मैनेज कर सकते बट यू आर सेइंग ना, वाइफ, यू नीड टू ड्रॉप द ठीक है वाइफ। सर, मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, गुड। हम कभी कार पे जाते वक्त गाड़ी पे भी वो ज्वाइन कर सकते, कोई दिक्कत ओके, नैन्सी। कर लेंगे सर मैनेज। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मतलब नहीं। तो बहुत दुखी से वो बहुत दुखी से क्लास भी लो, दुखी नहीं, मतलब नहीं, इतना दुख अच्छा नहीं है। नहीं हाँ, अगर एक काम कर सकते हैं, अगर मॉर्निंग पॉसिबिलिटी नहीं रहते रिकॉर्डिंग रेफर कर सकते हैं इवनिंग का। हाँ, ये कर सकते हो नैन्सी कि एग्जाम्पल, इफ यू कैन अटेंड, ओके, नहीं अगर आप अटेंड कर पाते हो तो अटेंड कर लोगे। ओके, और क्योंकि आप समझो, अगर यहाँ से 3 दिन क्लास नहीं होती है, इट विल बी 3 days, हाँ सर, मतलब। मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ हाँ सर, जी, मैं कर मैनेज लेंगे। कर लूंगी कसम सर। ठीक है, सो टुमारो वी आर गोइंग टू हैव क्लास फ्रॉम 7 AM to 8 AM इन द मॉर्निंग। इसे उठने में परेशानी सबको होगी, बट आप लोग सब उठने वाले हो, किसी को उठने में दिक्कत नहीं है, तो इट्स फाइन। बट अगर एक और चीज है गाइस, वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू, अगर बाय एनी रीजन इफ यू नॉट एबल टू क्लास अटेंड द क्लास, या जैसे आप काम करते हो, वो चीज समझ में नहीं आती है, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड यू कैन कनेक्ट मी इन द आफ्टरनून एज वेल। यस Okay, सर। even in the night, tomorrow I will be traveling in the train. So you guys can call me as well. कि सर ये नहीं समझा, वापस में समझा दो, I'll explain again. मैं वापस आप लोग को समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट द। एक और चीज है, जब तक आप लोग को नहीं समझेगा, अगर आप बोलो सर क्लास रिपीट करो, I'll repeat the entire class as well. The purpose, the class is for you. Okay, as I told you, I'm not in hurry to finish the batch and all. ठीक है, तो आप लोग एक बार देखो, कल मॉर्निंग में आते हो, समझता है तो ठीक है, फिर से नो सर नहीं जम रहा है, रिकॉर्डिंग से भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं उठ पा रहे, वॉट एवर द रीजन, आई विल से इट्स ओके, वी कैन हैव द क्लास ऑन सैटरडे संडे को भी। दिस सैटरडे संडे क्या है, तो आई विल बी इन आउट ऑफ टाउन, सैटरडे नाइट आई थिंक आई एम इन द ट्रेन। सो ठीक है, लेट्स हैव द क्लास, ओके, इन द मॉर्निंग। अगर कोई भी दिक्कत होती है, वी कैन have reschedule the class again and again, ठीक है। चलिए, okay, so tomorrow 7 AM we guys are going to meet you. Bye bye, nice to see you guys. Bye. Nice to see you guys. Thank you. Yes, Thank you, sir. Thank you, bye, good night. Good night.